हेलो व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक 19 फरवरी 2024। क्वेश्चन नंबर 1। विच कंट्रीज वोमेन्स टीम won the gold medal in the बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप? बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश के महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, that is India. India's women team performed brilliantly and won the gold medal in the Badminton Asia Team Championship. This is the first time that India won a gold medal in the women's event. Earlier, the men's team had won bronze medal in the 2016 and 2020 editions. PV Sindhu, Trisha Jolie, Gayatri Gopichand, and Kharab gave India the lead by winning their respective matches. Question number 2. With whom has IREDA signed an agreement for co-financing renewable energy projects? IREDA ने किसके साथ अक्षय ऊर्जा परियोजना के सह वित्तपोषण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? So correct option is option number A, that is Punjab National Bank. IRDA, Indian Renewable Energy Development Agency Limited, is a public sector enterprise established in 1987. Question number 3. In which state did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of Sri Kalki Dham Temple? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश. Question number 4. India signed a memorandum of understanding with which country for sharing open source digital public infrastructure? भारत ने ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोलंबिया. Question number 5. Which country is set to launch the world's first wooden satellite in collaboration with NASA? कौन सा देश नासा के सहयोग से दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जापान. Japan and NASA are planning to launch the world's first wooden satellite, LignoSat, into the space in summer 2024. The satellite is a collaborative project between the two agencies and is named after the Latin word for wood. LignoSat is made primarily from treated Japanese Mongolian wood, which is lightweight, durable, environmentally friendly material. It is also resistant to cracking and is an alternative to non-biodegradable material. The initiative aims to address space debris and pave the way for a more sustainable future in orbit. Kyoto University
and Sumitomo Forestry are manufacturing the satellite, which is the size of a coffee mug. Question number 6. Which movie won 7 trophies and was selected for the Best Film Award at the British Academy of Film and Television Arts BAFTA फिल्म अवार्ड? किस फिल्म ने 7 ट्रॉफियां जीती और ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुनी गई? So correct option is option number A, that is Oppenheimer. Best film Oppenheimer. Director Christopher Nolan. Producer Emma Thomas, Charles Roven, Christopher Nolan. Country United States. Question number 7. In which city has the statue of Khasi freedom fighter U तीरथ सिंह been unveiled? किस शहर में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तीरथ सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ढाका. Deputy Chief Minister of Meghalaya, Shanbhang Dhar, and Indian High Commissioner HC to Bangladesh, Pranay Verma, has jointly unveiled the statue of U. Tirath Singh, the brave freedom fighter from Khasi Hills who fought against the British colonial rule some 200 years ago. Fighting valiantly against the British, U. Tirath Singh was captured and deported to Dhaka, where he died in captivity on 17 July 1835. Question number 8. Who has been awarded the विशिष्ट सेवा मेडल रिसेंटली? हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हविलदार वीरेंद्र सिंह. Question number 9. Recently, in which state have huge reservoir of iron ore been found? हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज राजस्थान. Large deposits of iron ore have been found in Rajasthan's Karauli. Question number 10. Who has recently been appointed as the new MD and CEO of SBI Capital Market? हाल ही में किसे SBI Capital Markets का नया MD and CEO नियुक्त किया गया है? So correct option is option number A, that is Birendra Bansal. Question number 11. Recently, Nandkishore Yadav has been elected the Speaker of the Legislative Assembly of which state? हाल ही में नंदकिशोर यादव को किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिहार. Question number 12.
Which country has recently chaired the 62nd सेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट कमीशन? हाल ही में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया. Question number 13. Which organization will launch the next generation weather satellite INSAT 3DS recently? हाल ही में कौन सा संगठन अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह INSAT 3DS का प्रक्षेपण करेगा? So correct option is option number C, that is ISRO. Question number 14. Recently, the Chief Minister of which state has presented a proposal against one nation, one election? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? So the correct option is option number B, that is Tamil Nadu. Question number 15. Who will recently start India's first helicopter emergency service? हाल ही में कौन भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? So the correct option is option number B, Uttarakhand. On 19th February, Union Aviation Minister Jyotiraditya Scindia said that India's first helicopter emergency medical service would be launched from Uttarakhand. At the All India Institute of Medical Science in Rishikesh, a helicopter will be deployed from where it can be sent anywhere within a 150-kilometer radius to transport people to hospitals. Under the project Sanjeevani, the HEMS service would be operated. Question number 16. Recently, Sports Minister Anurag Thakur has handed over the torch of chess Olympiad to which country? हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? So the correct option is option number B, that is Hungary. Question number 17. Recently, the Chief Minister of which state has launched वन मित्र योजना? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? So the correct option is option number C, that is Haryana. Question number 18. Which IIT has recently developed anti-drone system? हाल ही में किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? So correct option is option number B, that is IIT Jammu. The end.